friends, I welcome you to the multiple choice question section of the third lecture. आज हम बात करेंगे 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के जवाब की। लेसन चल रहा है रोटेशनल डायनामिक्स, 12th स्टैंडर्ड के फिजिक्स का लेसन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क इक्वल टू द रेडियस। आर्क इक्वल टू द रेडियस, सो ये सर्कल है, this is the length of the arc, s radius of the circle theta, theta is in radian, is length of the arc upon radius of the circle, r upon r, because s is equal to r दिया है उन्होंने, the angle will be 1 radian, the answer will be 1 radian, that is a first option, दूसरा सवाल, एंगल की डेफिनेशन होती है इट्स लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन द रेडियस ऑफ द सर्कल। अ पार्टिकल गोज अराउंड द सर्कल वंस इन टाइम t, then the angular velocity is how much? Omega is equal to how much? Omega is equal to angular displacement upon time. Angular displacement for a complete circle is 2 pi. It is 2 pi upon t. We have proved theta is equal to omega is equal to 2 pi upon t. The answer is C, third option. C, third option. तीसरा सवाल, the angular speed omega is given by, omega is given by एक है 2 pi upon t, और इसके साथ साथ omega is equal to 2 pi upon t, which is equal to 2 pi into n, because reciprocal of time period is the frequency. तो जवाब है डी, फोर्थ ऑप्शन। दोनों ही सही है, ए और बी, सो जवाब हुआ डी, फोर्थ ऑप्शन। चौथा सवाल है द एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी के एसआई यूनिट क्या है? थीटा, सो इट विल बी रैड्स per second. The answer is theta, which is in radian, divided by time, which is in seconds, so it's rads per second, and the answer is B, second option. B, second option. पांचवा सवाल, fifth question. The SI unit of angular acceleration alpha will be rate of change of angular velocity. It will be rads per second square. It will be rads per second square. The answer is C, third option. The answer is C, third option. छठा सवाल, sixth question, क्या है? The relation between linear velocity v, angular velocity omega, is what? And vectorial form, that is radius vector. V bar is equal to, हमने प्रूव कराया है, V bar is equal to वेक्टोरियल फॉर्म में, स्केलर में V is equal to, स्केलर फॉर्म में V is equal to R ओमेगा होता है, वेक्टोरियल फॉर्म में V bar is equal to ओमेगा बार क्रॉस R बार। राइट हैंड रूल लगा के डायरेक्शन भी दिया जा सकता है इससे। सो ऑप्शन इज V bar is equal to ओमेगा बार क्रॉस R बार। द करेक्ट आंसर इज ए, फर्स्ट ऑप्शन। सेवेंथ क्वेश्चन क्या है? द रिलेशन बिटवीन tangential or linear acceleration and angular acceleration, यानी a और alpha very similar. A bar is equal to alpha bar cross r bar. A bar is equal to alpha bar cross r bar. जवाब है B, second option. जवाब है B, second option. चलिए बात करते हैं आठवें सवाल की। क्वेश्चन नंबर 8. Two particles of masses m1 and m2 are moving in concentric circle of radius r1 and r2 such that their period is same. Period same है, okay. Then the ratio of their centripetal acceleration r1 and r2 are their radii. Period is same, t1 is equal to t2. Centripetal acceleration in the first case upon centripetal acceleration in second case, it is equal to how much is what the question is. Centripetal acceleration is omega square r1
upon omega square r2, because if time period is same, omega, which is equal to 2 pi upon t1, will be equal to omega will be 2 pi upon t. So because t is equal, I'll write omega 1 is equal to omega 2 is equal to omega. तो ये कट हो गया. Centripetal acceleration in the first case upon second case, the answer is r1 upon r2. The answer is C, third option. Question number 9. Question number 9. A particle is moving in circular path of radius 5 meter. Okay. R is equal to 5 meter. And uniform speed 5 meter per second. UCM है. V is equal to 5 meter per second. What will be the time taken by the particle to complete half a revolution? So time taken by the particle to complete half a revolution, time taken by the particle to complete entire revolution will be equal to 2 pi r upon v. Half a revolution t by 2, right? Half a revolution t by 2. So पूरा लिखते हैं t by 2 is equal to pi r upon v. What is pi? उसको ऐसे रहने दो. R upon V. The answer is pi seconds. Question number 9. The answer is pi seconds. That is C, third option. 10th question. 10वां सवाल. What is the angular displacement of the minute hand in 20 minutes? 20 मिनट में कहाँ जाता है? तो 20 मिनट सपोज 12 पे है, तो 20 मिनट यानी कहाँ पे चला गया? 4 पे चला गया. Is it not? 20 मिनटों में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी 5, 30, 6, 90, 120 डिग्री. थीटा in degree is equal to 120 degree, which is equal to 120 into pi by 180, which is 2 pi by 3 radians. It is 2 pi upon 3 radians. The answer is B, second option. The answer is B, second option. Sawal number 11. If a particle is moving in circular path of radius r with a uniform speed v, then the angle described by it in 1 second will be how much? Theta is equal to how much? Uniform speed v, then the angle described by it in 1 second will be obviously equal to v upon r. Angle described will be equal to, in 1 second will be equal to v upon r. Angle described by it in 1 second will be equal to v upon r. Next question. कैसे आया? आई होप आपको समझ में आया है. थीटा इज इक्वल टू, that is angular displacement, omega upon t. Theta is equal to omega upon t, right? What is the value of this in 1 second? So it is omega. Omega is equal to how much? 2 pi upon t. Omega is equal to 2 pi upon t. Theta angular omega is equal to, एक second. Theta is equal to omega into t. I am sorry. Theta is equal to omega into t, that is equal to omega, time is 1 second, omega is equal to 2 pi upon t, that is 2 pi, या ओमेगा की जगह सिर्फ v by r लिख दो. So ओमेगा की जगह 2 pi में जाने से अच्छा है ओमेगा is equal to v upon r. The answer is v by r. The correct option is which one? The answer is C, third option. The answer is C, third option. चलिए बात करते हैं 12th 12वें सवाल की. क्या है 12th क्वेश्चन? कहाँ गया 12th? अच्छा मिल गया. The question is the angular speed of the minute hand of a clock in degree per second. Angular speed omega is equal to how much in degree per second?
डिग्री पर सेकेंड। कौन सा हैंड है भाई, कौन सा हैंड है ये, मिनट हैंड, मिनट हैंड। मिनट हैंड का ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टी, विच इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन, कितना समय लगता है मिनट हैंड को पूरा चक्कर लगाने के लिए, 1 घंटा लगेगा, दैट इज इक्वल टू 60 मिनट्स, that will be equal to 60 minutes. So this is divided by 60. This will be equal to pi by 30 rads per second आएगा। उनको किस में चाहिए, मैं उन्होंने कुछ गड़बड़ करके रखी। Yes, they don't want it in this, they wanted it 60 minutes. So into 60 into 60. So this will be in radian per second. रेडियन पर मिनट था, उसको रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट किया। सो दिस विल बी इन रेडियन पर सेकेंड। डिग्री के लिए 1800 इंटू 180 अपॉन पाई, आंसर इज 0.1 डिग्री पर सेकेंड। 0.1 आ रहा है आंसर। कैसे, मिनट हैंड है, टाइम पीरियड 60 मिनट्स, 1 घंटा, यानी इतने सेकेंड्स। फिर देखा रेडियन पर सेकेंड में चाहिए उनको, ओके, तो रेडियन पर सेकेंड, फिर समझा नहीं उनको डिग्री पर सेकेंड में चाहिए। सो आंसर इज 0.1 डिग्री पर सेकेंड। द आंसर इज बी, सेकंड ऑप्शन। द आंसर इज बी, सेकंड ऑप्शन। सवाल नंबर 13th क्वेश्चन क्या है, देखो। 2 cars both having masses m1 and m2 move in concentric circle of radius r1 and r2. Okay. If their angular speed remain the same, the ratio of linear speed v1 upon v2 is r1 omega upon r2 omega, क्योंकि ओमेगा सेम है, उन्होंने ही दिया है। So this will be equal to r1 upon r2. The ratio of the linear speed will be equal to r1 upon r2 है क्या आंसर? Yes, it is there. The answer is B, second option. The answer is B, second option. सवाल नंबर 14th क्वेश्चन और उसका आंसर। If the radius of the earth is 6400 kilometer, okay, then the linear velocity on a point on the equator के ऊपर के पॉइंट की linear velocity v is equal to r omega r into 2 pi upon t, 6400 into 10 raised to 3 into 2 into 3.14। अर्थ को अपने अराउंड घूमने के लिए लगने वाला जो समय है वो है 24 घंटे। सो 24 hours into minutes into seconds. Work out the value, and if you work out the value you will be getting it as, अरे यार ये उनको किलोमीटर पर आर में चाहिए। चलो छोड़ो फिर इसको, किलोमीटर पर आर में 2 into 3.14 into 6400 upon 24, that's it। चलो देखते हैं किलोमीटर पर आर में इसका आंसर कितना आएगा। 2 into 3.14 into 6400 divided by 24, 1675 किलोमीटर पर आर। ओके, चलिए बात करेंगे 15वें सवाल की, 15th क्वेश्चन। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ व्हील इज 70 rads per second. ओके, ओमेगा इज इक्वल टू 70 rads per second. If the radius of the wheel r is equal to 0.5, r is equal to 0.5 मीटर होगा। yes, लीनियर वेलोसिटी पूछा है v, सिंपल, v is equal to r into omega 0.5 into 70, 35 meter per second. The answer will be 35 meter per second, जो है C ऑप्शन, जो है C ऑप्शन। सवाल नंबर 16। If a small body of mass m is revolving with angular velocity omega in a circle of radius r, then the kinetic energy is how much? Very simple. Kinetic energy is equal to half of mv square,
that is half of m. V is equal to r omega, that is m r square omega square. The answer is half into m into r square omega square. The answer is C, third option. The answer is C, third option. सवाल नंबर 17. A motor car is traveling 20 meter per second. V is equal to 20. Okay. On a circular road of radius 400 meter, R is equal to 400 meter. Okay, fine. If it increases its speed at a rate of 1 meter per second square, tangential acceleration is 1 meter per second square, then what is the total acceleration? Okay, अब देखो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन ढूंढूंगा मैं, v स्क्वायर अपॉन r, 20 का स्क्वायर अपॉन 400, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन आया 1. ये दोनों सेंट्रीपेटल इज टुवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर, टेंजेंशियल परपेंडिकुलर. इन दोनों का रिजल्टेंट ढूंढना है मुझे, उन दोनों के बीच में का एंगल है 90 डिग्री. सो नेट एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस a सेंट्रीपेटल का स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर. आंसर इज √2. 17वें सवाल का आंसर है √2, जो है सी, थर्ड ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 18. Angular displacement of the second का hand of a clock in 15 seconds. 15 सेकेंड में कहां से कहां जाएगा? इधर था तो इधर आ गया. थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री विच इज इक्वल टू पाई बाय 2 रेडियंस. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी पाई बाय 2 रेडियन. दैट्स डी, फोर्थ ऑप्शन. डी, फोर्थ ऑप्शन. सवाल नंबर 19, 19th क्वेश्चन. कार इज ट्रैवलिंग 20 मीटर. अरे ये इसी का पार्ट है. कार इज ट्रैवलिंग विथ 20 मीटर पर सेकेंड. v इज इक्वल टू 20, r इज इक्वल टू 400. उन्होंने सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन पूछा है, v स्क्वायर अपॉन r, 20 स्क्वायर अपॉन 400. द आंसर इज 1. सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जवाब है ए, फर्स्ट ऑप्शन. आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. What is the angular speed of rotation? What is the angular speed of rotation about its polar axis so that the bodies on the equator will feel no weight, will not feel any weight? Body on the equator should not feel weight. So the weight is balanced by the centrifugal force, mr omega square. ओमेगा पूछा है क्या यहाँ पे? एंगुलर स्पीड. यस. तो वेटलेसनेस के लिए, फॉर वेटलेसनेस, mg is equal to mr omega square. This gets cancelled. Omega is equal to root of g upon r, that is root of 9.8 upon 6400 into 10 raised to the power 3. The answer is 9.8 divided by 6400 divided by 1000, square root of answer 1.237 into 10 raised to minus 3. 1.237 into 10 raised to minus 3. सही जवाब है ए, फर्स्ट ऑप्शन. तो देखिए गाइस एंड गर्ल्स, सभी 20 सवाल, उनके जवाब कैसे आया ये भी डिटेल. थोड़े कुछ ऐसे टाइप के डिफिकल्ट क्वेश्चंस हमने कवर किए. 20 क्वेश्चंस आर सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड. हमने पहले 2 लेक्चर में सिर्फ बेसिक देखे, आज बेसिक्स के साथ थोड़ा सा एप्लीकेशन का भी काम शुरू किया है. अगले लेक्चर में अगले दौर के सवालों के साथ वापस हाजिर होंगे. तब तक के लिए रुक जाते हैं. थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे.